Dear students, welcome back. Now, continuing your translation studies and the principle of translation course. Now, in the last video, we covered interpretation and adaptation. These are two important topics in translation, and we understood how they are closely intertwined. That means they are closely mixed processes that inform each other in the translation process. So, effective translation requires both interpretation as well as adaptation. So interpretation means first understanding the source text and then rendering into the target text. So effective translation requires both a deep understanding of the source text and the ability to adapt it skillfully to the target language or in the target language. So now if you've not seen the previous videos, you can go through, and now we'll cover a new topic today, and that is a preface to Ovid's Epistles by John Dryden, right? So a preface to Ovid's Epistles by John Dryden. It was written in 1680. And it serves as an introduction to Dryden's translation of Ovid's Heroids, right? So it is a collection of fictional letters from mythological heroines to their absent lovers. So for us, as far as translation is concerned, Dryden provides critical insights into translation and literary theory. Though you must be wondering why we are reading this preface to Ovid's Epistles, right? The reason is because this particular document, or you can say text, that is preface to Ovid's Epistles, that provides us a critical insight into translation and literary theory. इसीलिए आपके translation course में है. Otherwise actual क्या है? Actually Dryden's translation है Ovid की heroids का. Heroids क्या है? वो fictional letters from mythological heroines to their absent lovers. But this acts as a kind of translation document because it provides us critical insight into the translation theory. So what are the points that John Dryden covers in this regarding translation? First is he defines the purpose of translation. So according to Dryden and according to the preface to Ovid's Epistles by Dryden, he has defined the purpose of translation. तो ये ट्रांसलेशन में क्यों है आप लोगों को? क्योंकि उन्होंने बताया पर्पस ऑफ ट्रांसलेशन ड्राइडन में. सो ड्राइडन he asserts, he very clearly states that a translator's aim is not merely to provide a literal rendering of the original text, but to capture its spirit and essence in the target language. This should be clear to you कि ट्रांसलेटर का एम सिर्फ लिटरल ट्रांसलेशन करना, वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताना नहीं है, बट रादर देन टू कैप्चर इट्स स्पिरिट, कैप्चर द स्पिरिट ऑफ द सोर्स टेक्स्ट एंड एसेंस एंड देन convert into the target language, right? So he emphasizes the importance of preserving the beauty and elegance of the original work. तो दोनों चीज़ों को emphasize करता है वो. पहली चीज़ कि जो ओरिजिनल ब्यूटी है और एलिगेंस है, स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स जो लैंग्वेज में है, ओरिजिनल वर्क, दैट मीन्स द सोर्स टेक्स्ट, उनको भी प्रिजर्व करना है और अडेप्ट भी करना है, उनको बदलना भी है एज पर द टेस्ट और नीड, और यू कैन से एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कॉन्टेम्पररी ऑडियंस. So दोनों चीज़ें he lays or he puts equal emphasis on both aspects of translation. He emphasizes the importance of preserving
the beauty and elegance of the source text, while he also advocates adapting it to suit to the taste and expectation of the contemporary audience. So this is the purpose of translation according to Dryden's preface to Ovid's Epistles, right? So I think purpose is clear, right? So next point which Dryden covers in these epistles is ट्रांसलेटर्स रोल. पहला तो हो गया पर्पस क्या होना चाहिए ट्रांसलेशन का, तो पर्पस क्लियर हो गया. पर्पस यही है कि जो सोर्स लैंग्वेज है, सोर्स टेक्स्ट है, उसकी ब्यूटी और एलिगेंस को भी हमने बरकरार रखना है, और साथ ही वी हैव टू अडेप्ट इट, हमने इसको बदलना भी है अकॉर्डिंग टू द नीड, टेस्ट और एक्सपेक्टेशन ऑफ द टारगेट ऑडियंस, राइट. देन रोल क्या होना चाहिए ट्रांसलेटर का. So Dryden, he reflects on the translator's role as an intermediary between the author and the reader, likening translation to the art of painting. So as far as translator's role is concerned, so Dryden considers the translator as an intermediary, कि बिचौलिया मतलब बीच वाला जो है, इंटरमीडियरी, बीच वाला जो लिंक है, इंटरमीडियरी लिंक बिटवीन द ऑथर एंड द रीडर. ऑथर कौन हुआ? जो सोर्स टेक्स्ट का ऑथर है, और रीडर कौन हुआ? जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, टारगेट रीडर है, राइट. तो उन दोनों के बीच में जो इंटरमीडियरी लिंक है, बीच वाला जो लिंक है, वो ट्रांसलेटर. एंड अनदर थिंग विच ही एड्स अप इज दैट ही कंपेयर्स ट्रांसलेशन टू द आर्ट ऑफ पेंटिंग. वो कहता है कि ट्रांसलेशन बिल्कुल पेंटिंग की तरह है, वेयर द ट्रांसलेटर एक्ट्स एज अ स्किल्ड आर्टिस्ट, जहाँ पे ट्रांसलेटर जो है एक स्किल्ड पेंटर का काम करता है, who selects and arranges materials to create a new work of art, जो पहले चुनता है फिर उनको अरेंज करता है उस मटेरियल को, so that he creates a new work of art. न्यू वर्क ऑफ आर्ट. तो पेंटर का काम यही होता है, वो कोई नेचुरल ब्यूटी सीनरी देखता है या कोई फिजिकल ब्यूटी देखता है, तो क्या करता है? उसको कॉपी करता है, वो अपने इमेजिनेशन से उसमें रंग भरता है और उसको एक नया रूप दे देता है, और साथ ही साथ वो जो उसका वर्क ऑफ आर्ट है, वो जिस चीज़ को उसने कॉपी किया उसकी ब्यूटी और मीनिंग को भी रिफ्लेक्ट करता है, राइट. So here again the purpose is met, the purpose which he defined earlier. So what is the translator's role? Translator's role according to Dryden. So according to Dryden, translator's role is that of an intermediate link between the author and the reader. That means between the source text and the audience. और दूसरा क्या करता हो? he compares translation with the art of painting. और एक ट्रांसलेटर को क्या मानता हो? एक स्किल्ड आर्टिस्ट की तरह, स्किल्ड पेंटर की तरह, who selects and arranges materials, जो चीज़ों को पहले चुनता है फिर उनको अरेंज करता है, and he creates a new work of art. that is his creativity. और ऐसा वर्क ऑफ आर्ट जो ओरिजिनल की ब्यूटी और मीनिंग को भी रिफ्लेक्ट करता, right? So that is translator's role. If you understood the purpose, because purpose भी वही था कि जो purpose है translation का, that is to retain the beauty and elegance of the original work. और साथ में क्या करना है? You have to adapt, change करना है इसको so that it suits your target audience. और वही ट्रांसलेटर का भी रोल है. क्या करेगा वो? First he will select and arrange the material to create a work of art. एक अडेप्ट करेगा अपने ऑडियंस के टेस्ट के हिसाब से, और साथ ही साथ he will remain faithful to the original work, right? So that is a translator's role. Then he talks about the challenges of translation. So Dryden, he acknowledges, वो मानते हैं कि there are challenges which are inbuilt in translation. खासकर when you are dealing with works of poetry and literature, because they are a little maybe subjective, or you cannot have exact translation of such kind of works. तो क्या क्या difficulties हैं translation में?
there may be difficulties in catching up the complexities of language, meter or style, and so certain elements may be lost or changed in the process. So these are the challenges of translation. When it comes to challenges of translation, he admits that there are challenges in translation, particularly dealing with the works of poetry and literature. Or what are those challenges? They are the complexities of language, meter or style. So maybe sometimes the translator may not be able to catch up with these complexities, and hence certain elements, कुछ चीज़ें जो है वो ख़त्म भी हो सकती है, कुछ बदल दी जा सकती है in the process of translation. The next point he covers is freedom versus fidelity. So now freedom means if the artist or if the translator has how much of freedom, he can alter the original text or he should remain faithful to the original text. So Dryden explores the tension between fidelity to the original text and translator's creative freedom. अब वो पेंटर है, मान लो पेंटर है, तो अब उसके पास दो चीज़ें हैं. एक है वो जो चीज़ देख रहा है उसी को बिल्कुल हूबहू उसी की क्वालिटीज़ को भी उसमें अपनी पेंटिंग में डाले, ये एक चीज़ है. और दूसरी है कि वो अपनी क्रिएटिविटी कितनी रखे, सो दैट his painting reflects the original also, at the same time showcases his creativity also. मतलब दोनों चीज़ें रहे उसमें. जैसे मान लो आप घर में पिज़्ज़ा बना रहे, तो अब आपने उसको अपने टेस्ट के हिसाब से भी चेंज करना है, आपने अडेप्ट करना है जैसा आपका टेस्ट है. और दूसरा कि वो पिज़्ज़ा जब आप बनाएं तो वो पिज़्ज़ा जैसा ही हो, ऐसा नहीं हो कि वो डबल रोटी बन जाए और या कुछ और ही बन जाए, भटूरा बन जाए. ठीक है, तो दोनों चीज़ें. सो दैट इज़ द टेंशन बिटवीन फिडेलिटी टू द ओरिजिनल टेक्स्ट एंड ट्रांसलेटर्स क्रिएटिव फ्रीडम. तो क्या कहते हैं इसके बारे में? ही आर्ग्यूज दैट while translators should strive to remain faithful to the author's intention. वही पर्पस से ही सारी चीज़ें जुड़ी हुई है. यहाँ भी वही बोलता है कि ट्रांसलेटर को फेथफुल रहना चाहिए ऑथर्स की इंटेंशन के बारे में. एंड दे ऑल्सो मस्ट एक्सरसाइज जजमेंट एंड डिस्क्रिशन. साथ ही उन्हें अपना क्रिटिकल जजमेंट लगानी है when they are changing the text to the target language and cultural context. So कहने का मतलब है एक बैलेंस्ड अप्रोच उसको रखनी है फिडेलिटी और फ्रीडम के बारे में. इतना फ्री भी नहीं हो जाना है कि आप जो नई चीज़ बनाए वो बिल्कुल पुरानी से एकदम ही अलग हो जाए, उसमें कोई एलिमेंट ना दिखे उसका. और इतने भी आपने फिडल या फेथफुल नहीं हो जाना है कि जो आपका टारगेट ऑडियंस है उसको समझ ही ना पाए उसको, या वो उसके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में वो आ ही नहीं पाए. तो यू हैव टू मेंटेन, द ट्रांसलेटर हैज़ टू मेंटेन अ balance. He has to adopt a balanced approach. Then lastly, he talks about literary criticism. And Dryden provides literary criticism and analysis of Ovid's Heroics, discussing its theme, characters, and artistic merits. So this is what he critically examines Ovid's Heroics, right? So overall, you can say that Preface to Ovid's Epistles is not only a reflection on the art of translation, but also a testament or a kind of proof to his admiration for Ovid's work and his commitment to bringing it to a new audience. So एक significant contribution है translation theory में जो जॉन ड्राइडन का Epistles है, Preface to Ovid's Epistles. Right, so I hope you understood this. अगर आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, discuss the role of Preface to Ovid's Epistles towards translation theory. Or you may be asked other simple short questions also. What is the purpose of translation according to Dryden, as explained in Preface to Ovid's Epistles? Or
You may be asked, define translator's role as per Dryden's preface to Ovid's Epistles, or what are the challenges. So I hope you understood this. Now, next topic that we will cover up in this particular video is translation. What are the challenges and problems of translation? So this may be a long answer question may be asked to you in the exams. What are the challenges and problems of translation? So we'll quickly go through them one by one. So first challenge is linguistic differences. So as we discussed earlier also, the different languages have their own structures. Vocabularies are different, their idioms are different. So it becomes difficult to find direct equivalents for words and phrases between languages. So that is a problem which is there in translation. कि हर लैंग्वेज की अपनी वोकेबलरी है, अपने इडियम्स हैं, अपने फ्रेजेस हैं, उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है. जैसे हमने एग्जांपल पहले भी लिया था, जैसे हिंदी में राम खाना खाता है तो अलग स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब बाद में आता है. इंग्लिश में उल्टा है, सब्जेक्ट पहले, बीच में वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट. सो अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो राम खाना खाता है हो जाएगा राम फूड ईट, राइट, जो इंग्लिश में गलत हो जाएगा. सिमिलरली देयर आर वोकैबुलरीज, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एन एग्जैक्ट इक्विवेलेंट, राइट. जैसे जलेबी है, जूठा है, राइट. so you cannot find exact equivalent in English from Hindi, right. so इस तरह हर लैंग्वेज के अपने अपने वो है, सब वोकैबुलरी है, इडियम्स हैं. so that is the first problem. Second is cultural nuances, cultural complexities. Now language is not just words, they carry a culture. Okay, so when you are translating, actually you are carrying across those cultural elements from one culture or one part of the world to another. So as I told you that there may be different customs, complexities, cultural references, so which we may not have, which may not have direct equivalents in the target language, right. So there may be certain customs which are followed here in the hills or in India which have no equivalent in the West, right. Like the marriage ceremonies which we have here, के साथ फेरे और इस तरह से सिंदूर and also that is if you write in the same manner to a European audience or a Western audience, then they may not be able to relate if they haven't seen such customs. So it is very difficult. There are difficulties in in understanding those cultural references, राइट. सो इसीलिए ये भी एक प्रॉब्लम है, कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटीज़. हो सकता है उसकी डायरेक्ट इक्विवेलेंट हो ही नहीं, वहाँ तो ऐसा होता ही नहीं है, भाई पंडित आते हैं और मंत्र पढ़ते हैं और साथ फेरे. तो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट इन इंडियन कल्चर. सो इट्स नॉट, इफ it may not, it doesn't have any equivalent in the Western culture. So they have a different culture. So third thing is ambiguity and polysemy. Ambiguity means there may be some words and phrases which have multiple meanings, जिनके एक से ज़्यादा मतलब होते हैं, और interpretations, right, which may lead to ambiguity in translation, right. And they may be misunderstood. Okay, so there are many words which have got multiple meanings or interpretations, different interpretation. एक ही वर्ड है which may be considered obscene in one language, किसी लैंग्वेज में उसको गलत समझा जाता है, किसी में उसको सही समझा जाता है. So you can understand there are so many words according to their culture. Then contextual challenges का मतलब होता है कि कौन सी चीज़ कैसे कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई, क्या हिस्टोरिकल, सोशल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट क्या था. एंड
खासकर ऐसी टेक्स्ट जिनके अंदर ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल और लिटरेरी, वहाँ पे मुश्किल हो जाता है. देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द एंटायर हिस्टोरिकल, सोशल और लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट. नेक्स्ट इज सब्जेक्टिविटी. सब्जेक्टिविटी होता है कि दैट मीन्स पर्सन स्पेसिफिक जो इमोशंस होती, राइट. So when you are translating subjective means which are related to personal rather, or emotions. So translating those subjective or emotions, subjective works or emotive language, that also becomes a challenge. Or as interpretation, जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग आदमी की अलग अलग हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ कैरेक्टर इज क्राइंग over something, so you know it may have different reactions, emotions. It may evoke different emotions in two different people. किसी को मज़ा भी आ रहा होगा, वो उसको थप्पड़ पड़ रहे हैं, तो किसी को गुस्सा आ रहा होगा, किसी को दुख हो रहा होगा. So so these, that is very difficult to translate those subjective feelings or emotions based on the actual emotion, right. Next is style and register. Style and register का मतलब होता है कि every author has his own style, tone and register. That means how he writes. So it may be very difficult to copy or replicate the same thing in the target language. So this is another problem, style and register. Next is technical and specialized terminology. There are certain certain terms, especially technical or specialized texts, which require expertise in the subject matter. और आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है या टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है. सो दे मे नॉट हैव डायरेक्ट इक्विवेलेंट्स इन द टारगेट लैंग्वेज, राइट. जैसे बिट है, बाइट है, तो बिट और बाइट को आप हिंदी में क्या बोलेंगे? बिट हो गया टुकड़ा, बाइट हो गया थोड़ा बड़ा टुकड़ा. ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि बिट और बाइट, सो दे यू हैव टू रिमेंबर इन दो सच काइंड ऑफ specialized or technical words in their original manner, right. So आपको बिल्कुल उसी तरह से समझने पड़ेंगे जैसे वो उसमें लिखे हुए bit and byte, right. The next is time constraint. So translators, they work under tight deadlines because they have a lot of deadlines to keep. और जब आपके पास समय है तो दे मे बी लैकिंग टाइम. तो जब टाइम कम है तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी एंड एक्यूरेसी भी ट्रांसलेशन की उतनी अच्छी नहीं होगी. सो टाइम कॉन्स्टेंट इज अनदर प्रॉब्लम. देन नेक्स्ट इज मशीन ट्रांसलेशन. nowadays you have so many tools and techniques, so many apps available. Google tools are there, translation tools. You just type in the language and just mention which language you want them to be translated. So it happens within a very short period. But the problem of machine translation is that it cannot understand the context. It cannot understand the context means historical, political or social context, or any complexities of language, and it cannot find an exact idiomatic equivalent of a particular idiom in the target language. So आपको जो ट्रांसलेशन मिलेगी वो बहुत inaccurate भी हो सकती है और nonsense भी हो सकती है, nonsensical, right. So you might also have seen it sometimes when you translate using some tools. So you find the translation to be meaningless or sometimes very funny also. तो ये machine translation की problem है. Sometimes it will help you if the language is plain and simple, but when it comes to context, cultural, social or historical context, or understanding the complexities of language या idioms हैं, right, तो उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाती है. जैसे मान लो इंग्लिश में आपने लिखा a bad workman coils with his tools, तो उसका हिंदी में ट्रांसलेशन आएगा एक ख़राब जो कामगार है वो अपने औजारों से लड़ता है.
तो ये उसका मीनिंग ये आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं आएगा कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जबकि उसका एग्जैक्ट इक्विवेलेंट हिंदी में क्या है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, right? So these are the problems of machine translation. Then last is the ethical considerations. तो ethical मतलब कई बार sometimes the translators have to pass through very strong tests of ethical problems, so they must maintain confidentiality, and sometimes they may not, so preserving the voice, author's voice and intent, and they should it is difficult to avoid bias or censorship, right? So these are the problems and challenges of translation. So now quickly we will just have a recap of these translation challenges and problems. First is linguistic differences. Why? Because of every language has its own structure, vocabulary and idioms, so it is difficult to find an exact equivalent, right? Second is cultural complexities. Every culture has its own customs, own complexities, so there may not be direct equivalents in the target language, so it becomes another problem. Next is ambiguity and polysemy. So there may be words which have multiple meanings or interpretation, so which may lead to ambiguity in translation. Next is contextual challenges. So it is very in order to understand a text correctly, you must understand the historical, social or literary context. So if they are not understood in the proper manner, and sometimes it is difficult to understand them in the right way, so that so then their exact meaning and intent cannot be conveyed. So that is another problem, contextual challenges. Next is subjectivity. Subjectivity means when emotions or personal emotion especially, or personal kind of text is to be translated. So again the translator may not be able to just be able to translate those things exactly as the author intended, or there may be some personal emotions attached to the translator also. Next is style and register. So every author has his own style, tone and register, so which may be difficult to replicate. Next is technical and specialized terminology. So there are certain technical and specialized terms which may not have direct equivalents in the target language. Then there may be time constraints because of tight deadlines or tight schedule. So the translator may not give enough time, so that will hamper the quality and accuracy of translation. Then machine translation, though it is a great help to mankind today, but again when it comes to context complexities and idiomatic expressions, so machine translation can give you faulty translation, inaccurate, or which may sometimes appear very nonsensical also. Then last is ethical considerations. So translators sometimes may not maintain confidentiality, or they may not be able to preserve the author's voice and intent, and sometimes it becomes difficult to avoid their personal bias or censorship also. So these are the problems or challenges of translation. But again, these a translator who possesses linguistic problem के लिए उसको linguistic proficiency चाहिए, cultural complexities को समझने के लिए उसको cultural competence चाहिए, और subject matter expertise, and if a translator has good critical thinking skills, so then he can definitely do a good job or good work, right? So these are the challenges of translation. Now I think this is enough. In the next video we will take up the cultural gap and untranslatability. Right, these are two important topics that we'll take up in the next video. Okay, thank you.